कैसे हो दोस्तों? So chapter number 6 EMI, we have discussed total 6 parts, and after the completion of these 6 parts we considered first JEE NEET paper or test of chapter number 6. So friends, today we would like to think about the solution of this very important 15 questions. All questions are very important as well as the sure short candidate, particularly for competitive exams. सो दोस्तों टर्न बाय टर्न सॉल्व करते हैं. स्टार्ट विथ पेपर 1 चैप्टर नंबर 6 EMI solution JEE NEET paper. So you know that very well. What's the first question? The magnetic flux associated with coil is given by equation phi is equal to, what is the, we can say that magnetic flux phi is equal to 6t square minus 5t plus 1. And you can see this is the time dependent point. At t is equal to 0.5 second, the induced current in the coil is blank if the resistance already 10. So your target to find current in the circuit at t is equal to 0.5 second if the resistance of the circuit is given 10 ohm. So friends, start with, you know that very well, current. What is the general formula for induced current? Induced current is equal to induced EMF upon resistance as per Ohm's law. Okay, so your next target to find induced EMF. What is the formula of induced EMF? So induced EMF epsilon is equal to, you know that very well, d phi by dt, the rate of change of flux, exactly the negative of rate of change of flux, always equal to magnitude of induced EMF. So friends, now we have to think about differentiation of this flux. It is already given 60 square minus 5t plus 1. Okay, so if you take differentiation, then 6t square differentiation 2t, t differentiation 1. What is the differentiation of this 1? Obviously constant. So for constant term differentiation 0. So induced EMF epsilon is equal to 12t minus 5. But this is time dependent induced EMF. You can see here time dependent. So with respect to time, induced EMF already changes. But we would like to find current at 0.5 second. So we have to find induced EMF at 0.5 second. So it is 1 volt. You can see what is the answer. It is 1 volt. But your target to find current. So current I is equal to epsilon upon R. Here epsilon is already given. Given, that means already we have found. And resistance given, it is 10 ohm. So if you simplify, then 0.1 ampere induced current is produced, particularly for this situation. So very interesting, no doubt, very easy. But I can say very, very important, particularly for Gujarat board point of view as well as competitive exam point of view. So analyze. Okay friends, so we have discussed question number 1. So now we would like to think about question number 2. A coil of surface area 100 centimeter square. Area of coil is given having 50 tons, is held perpendicular to magnetic field. Magnetic field of intensity 0.02 Weber per meter square. So here question number 2, here area already given, then number of tons given, capital N. After that intensity of magnetic field given, then the resistance of the coil is 2 ohm. Resistance also given, then it is removed from the magnetic field, then in 1 second, the time duration also given. There is a coil having area A, number of turns N, it is placed in magnetic field B. But in within 1 second, this coil is get removed from magnetic field. Obviously, change in magnetic field, change in magnetic flux, induced EMF. Here resistance also given. But what's the question? Induced charge in the coil is blank. So your target to find induced charge. This is the most IMP. And already we have discussed this point. पार्ट 2-3 ऑफ EMI मैंने बताया था इंड्यूस्ड चार्ज है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज?
induced charge delta Q is equal to change in magnetic flux upon resistance. याद करो ये रिलेशनशिप, मार्वेलस रिलेशनशिप 2 मार्क्स में ये थियोरेटिकल पॉइंट्स में भी आ सकता है. So your target to find here delta Q. So delta Q is equal to delta phi is the magnetic flux. What is the magnetic flux? General formula of magnetic flux, area into magnetic field. But for n number of turns it is NAV upon you can see that R. This is the most important point. Here all values given, set up the values, then here answer 0.005 Coulomb. This is your answer. Keep in mind in this entire discussion, that means whatever the data is given, this time duration is given only for misguiding purpose. काफी स्टूडेंट्स इस टाइम को लेके थोड़े हटके कंसेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा दिमाग अप्लाई करना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. सो फ्रेंड्स, यू कैन सी दिस इज द सेकंड नंबर क्वेश्चन. सेकंड नंबर आल्सो वेरी IMP. जस्ट चेक इट. Now we would like to think about the next question. All questions you have to solve at least one time at your home as a homework and submit. और मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे पेपर की एक स्पेशल नोट बनाते हैं सॉल्यूशन की. ये बी ग्रुप वाले और जिसको ए ग्रुप में कॉम्पिटिटिव आगे बढ़ना है वो सभी देखे बराबर. Now we would like to think about question number 3. Third number question also very IMP. So concentration required now. Question number 3. Okay. When electric current in a coil steadily changes from plus 2 ampere, current is changes from plus 2 ampere to minus 2 ampere. Ready? Plus 2 ampere to minus 2 ampere in 0.05 second. An induced EMF of 0.8 volt is generated. Induced EMF 0.8 volt is generated because of change in current from plus 2 ampere to minus 2 ampere. In this time duration, induced EMF is produced. It is obviously because of change in current. There is some change in magnetic flux. Change in magnetic flux, induced EMF. And what's the target? Then what's the self-inductance of the coil? Self-inductance. That means your target to find AL. So friends, we have already idea about formula for self-inductance. Self-inductance given by equation simply N phi by I. We can also write this formula, epsilon is equal to minus L di by dt. These are the formulae associated with self-inductance. This is the general formula of self-inductance. This is the formula of self-induced EMF. So you can see here induced EMF is given, the change in current also given time. So this is the applicable equation. So from this equation L is equal to epsilon upon di by dt. Here minus sign suggesting Lenz's law. और मैंने कितनी बार बोला है लेंस लॉ का एक ज पॉइंट, जिसके कारण बंदा बना, बंदा उसी के ओपोजिशन में. आपको आपके पेरेंट्स पढ़ लिख के वो लेवल पर लाके आपके पैरों पे खड़े कर देते हैं आपके पेरेंट्स. मगर एक टाइम ऐसा आता है कुछ लोगों की लाइफ में, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों की लाइफ में कि वो लोग जिसके कारण बने हैं, अपने पेरेंट्स के कारण बने, अपना वजूद बनाया है, उसी के ओपोजिशन में आ जाते हैं. तो वो अपन लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. सो फ्रेंड्स, हियर एप्सिलॉन इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 0.8. व्हाट इज द DI, चेंज इन करंट? इट इज प्लस 2 एम्पियर टू माइनस 2 एम्पियर. ये जरा चिकना केस है, देखो. सो फाइनल करंट -2, it is suppose I2, this is I1. Many students you can see that particularly for this type of situation many students make mistake here, and because of only one word hurriedly. काफी लोगों को ऐसा होता है कि झट से छा जाओ, वो छा जाने में जिसे कह सकते खो जाते हैं. तो इसलिए जरा देखो, दिस इज I1, दिस इज I2. काफी स्टूडेंट्स हरीडली क्या करते हैं, प्लस 2 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर 0, चेंज इन करंट I2 minus I1. So -2 -2 -2 -2
upon delta t it is 0.05. So I can write 0.8 into 0.5 upon minus 4. Here minus sign लेंस लोग रखेंगे, ना रखो तो भी चले, रखो तो भी चले, ना रखो तो भी चले. Minus minus cancel. Here minus sign don't play any important role, don't worry. So it doesn't play any important role. So if you simplify, then here your answer is simply 0. You can see that 1 Henry, because 8 by 40, 4 cancel. So what is the inductance of this coil? It is 0.1 Henry. Both easy question. So you have to consider it and try to solve. You can see that very carefully and logically. Okay, now friends, question number 4. Now we would like to solve question number 4. This is the most IMP question of this paper, I can say. The mixture inductance of the system of two coil is 5 millihenry. Question number 4, mixture inductance 5 millihenry. Okay, and the current in the first coil, you know that mixture inductance. Mixture inductance, that means कोई दूसरा नाश्ता लेके आए और हम उड़ाए. समझ में आया कि नहीं? So there are two coils. So current in the first coil is already changed as per equation I naught. Current is given by equation I naught sin omega t. Superb. ये question B group वाले खास देखे. And I naught is already given 10 ampere here. I naught 10 ampere. This is the maximum value of current. Omega given 100 pi radian per second. This omega 100 pi radian per second. Then what is the question? Then value of maximum induced EMF. Wording को पकड़ना. The maximum induced EMF in coil number 2. That's your target. You know that very well system of mixture induction. What happens? There are two coils. Coil number 1, coil number 2. Current passing through coil number 1 is I1. If you pass current through first coil, then there is magnetic flux associated. It is phi 2. But whatever the current passing through first coil changes, that's why magnetic flux associated with the second coil changes. Change in magnetic flux induced EMF. इधर आप अच्छी तरह देखो तो जो करंट फर्स्ट कॉइल में से पास हो रहा है वो ऑलरेडी टाइम डिपेंडेंट करंट है. इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ऐसे ऐसे करंट की वैल्यू चेंज होगी. जैसे जैसे करंट चेंज होगा ऐसे ऐसे जो सेकंड कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएट है वो चेंज होगा. और फ्लक्स एसोसिएट जो चेंज होगा उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो मैंने मिक्सचर इंडक्टेंस के भी दो फॉर्मूले आपको दिए थे, याद करो. मिक्सचर इंडक्टेंस इसी की तरह पहला फॉर्मूला था N5/I और दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था एप्सिलॉन 2 अपॉन di1/dt. याद करो. इसके ऊपर से हमने मिक्सचर इंडक्टेंस की दो डेफिनेशन दी थी. नंबर 1, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड, दिस इज phi 2 I1. Magnetic flux associated with any one coil per unit current passing through first coil, it is called mixture inductance of the system. Mixture inductance of the system of two coils, that means the induced EMF produced in any one coil per unit rate of change of current in other coil. तो दोस्तों सबसे पहले ये फॉर्मूला अपन लोग देखेंगे क्योंकि इधर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है. सो स्टार्ट. मिक्सचर इंडक्टेंस इट इज एप्सिलॉन 2 अपॉन di1/dt. So induced EMF is mixture inductance multiplied by di1/dt. Ready? So this is your equation already. Now mixture inductance with you. So we will set up the value. Mixture inductance M, it is 5 millihenry. First of all, we have to think about di1/dt. That means the differentiation of current. It is I naught sin omega t. Okay. So we'll remove this portion because already we have discussed it. So now induced EMF epsilon 2 m. I naught already constant. What is the differentiation of sine? Obviously cos. So cos omega t. But here for this omega t we have to also think about the chain rule. So what is the differentiation of omega t? It is omega. So epsilon 2 is equal to m I2 omega cos omega t. This is your induced EMF. But friends, check this word, maximum induced EMF. Here induced EMF depends upon cosine function.
What is the maximum value of cosine function? Obviously, to obtain maximum value, then it is 1. So maximum induced EMF, it is mi2 omega only. This cos omega t becomes equal to 1. So what is the AMR? It is already 5 millihenry. So 5 into 10 raised to minus 3 because of milli. Current, यानी कि this is I naught already 10. Omega, it is already 100 into pi. You can see all values with you. Simplify, you will get answer simply 5 pi because ये तीनों cancel. 5 pi volt. This is the most IMP question. और ये question already complete में आया हुआ है. So this is the masterpiece. Don't forget. So B group वाले खास देखे, very interesting numerical. You can see here the case of differentiation, chain rule. Here some concept of cosine function. What is the range of cosine function? -1 to 1. That is the minimum value of cos -1, maximum value +1. Instead of max, suppose they ask the question minimum, then we have to obtain this answer in the form of negative. Anyway, just analyze. Fourth number, no doubt, I can say one of the supreme question of this paper. Okay, so now we would like to think about question number 5th. So सभी क्वेश्चन नो डाउट बेहतरीन. सो दिमाग यूज करने का, कोई बोले वही प्रॉब्लम है. सो अपन लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं. और ये चैप्टर देखो, आज लास्ट टाइम हमने 6 पार्ट डिस्कस किए, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन थे. अब ये चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू होने वाला है, इंडक्टर, जो मैंने उसका बेस बना के रखा था पार्ट 6 में. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, it means EMI part 7. This is not, you can see that part 7, this is paper solution. Okay, so now question number 5th. Okay, question number 5th, the distance between the extreme points of two wings of an aeroplane is 50 meter. So distance 50 meter and is flying at a speed of 360 km per hour. So इस तरह का प्लेन, ये जो एक्सट्रीम डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, दिस इज एयर, इट इज 50 मीटर. ओके, एंड दिस प्लेन इज ऑलरेडी मूविंग विथ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर. 360 किलोमीटर पर आवर. इफ द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 2 into 10 raised to minus 4, in short magnetic field 2 into 10 raised to minus 4 Tesla, then what is the induced EMF across the two end points? So induced EMF, what is the formula? BVL. This is the motional induced EMF, so it is BVL. So B 2 into 10 raised to minus 4, 360 km per hour. So 360, you know that very well, conversion. Kilometer, that means 1000 meter an hour, that means 3600. If you set up all values, then here you can see that answer. Okay, we इधर से solve कर देते हैं, पहले 0 cancel, 3600 आंसर आएगा. So V 100, L 50. If you multiply, then your answer 5 to 10, that means 1 volt. This is, you can see that answer of question number 5th. Very easy. ऐसा ही क्वेश्चन अपन लोग एक बार और सोल्व करने वाले हैं, NCERT टेक्स्ट बुक रिलेटेड, but in next lecture. Question number 6. A wheel of 10 metallic spokes. This type of wheel is given and there are 10 metallic spokes. इस तरह 10 metallic spokes है. Okay, and each of 0.5 meter long, rotated with a speed of 120 revolution per minute. What is the length of this 0.5 meter long, rotating with angular frequency 120 revolution per minute? Interesting. In a plane perpendicular to the magnetic field. Okay, and if a magnetic field is given 0.4 Gauss, 0.4 Gauss, you know that 1 Gauss 10 raised to minus 4 Tesla. ये अच्छा question है, just check it. Then what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? ये rim और axle और rim, ये point find करना है.
तो अपन लोगों ने देखा है ऐसा कोई भी सर्कुलर व्हील ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट करता हो तो कोई भी सेंटर पॉइंट और जो एंड पॉइंट है उसके बीच का ईएमएफ का मैंने शॉर्टकट आपको दिया था 1/b ओमेगा एल स्क्वायर. यू कैन सी दैट ये शॉर्टकट हमने डिस्कस किया हुआ है 1/b ओमेगा एल स्क्वायर. दिस इज योर इलास्ट्रेशन नंबर 6.6. घर पे चेक करना टेक्स्ट बुक रिलेटेड. ओके फ्रेंड्स, तो अपने इधर सब कुछ इंफॉर्मेशन है. b ऑलरेडी गिवन, ओमेगा गिवन एंड r यानी डिस्टेंस l भी गिवन. तो सभी वैल्यू से आपके पास, मगर इधर एक लोचा है, काफी लोगों को ये पता नहीं चलता है, ओमेगा 120 रिवोल्यूशन पर मिनट. ओके, डेटा में वापस बता देता हूँ. ओमेगा एक ही चेंज करना है, बाकी आप देखो l की वैल्यू है 0.5 मीटर, मतलब b also given 0.4, so I can directly write 0.4 into 10 raised to minus 4 Tesla. Just check it, you can see. Okay, now 124 revolution per minute. How can you convert in the form of radian per second? चलो think about it. Second है मतलब you know that very well, we have to divide by 60 and one revolution, then how many radian? If wheel performs or completes one revolution, then it is 2 pi radian. So 120 multiplied by 2 pi upon 60. In short, 240 pi upon 60. 0 0 cancel, 6 4 जब 4 pi आंसर अपन लोग लेंगे इसका. ओके, अब ये सभी वैल्यूज इसमें रख दो, ये जो इक्वेशन अपना है उसमें. सो यू विल गेट आंसर 62.8 माइक्रोवोल्ट, यानी कि 62.8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 वोल्ट. ये क्वेश्चन दम है तो शॉर्टकट के कारण, ये शॉर्टकट दिमाग में होना चाहिए. दूसरा ऐसा कन्वर्जन आपको बताना चाहिए. काफी स्टूडेंट को एक गॉस के प्रॉब्लम होते हैं, काफी स्टूडेंट्स को एक कन्वर्जन नहीं पता चलता है. तो एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट करे व्हील, तो अपन लोग जानते हैं 2 पाई रेडियन एंगल कवर करे, और मिनट को तो सेकंड में 60. तो ये बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 6, just analyze 5 and 6 just in front of you. Okay friends, so now we have to think about question number 7. ये 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हटके इसलिए क्योंकि ये अपन लोग प्रैक्टिस अभी इसमें मास्टरी लेना है बाकी. फिर भी मैंने पूछा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंसेप्ट दे दिए थे इंडक्टर के, और इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी सोल्व करेंगे, डोंट वरी. अभी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस करते हैं, ताकि 2 बार हो जाए, आज भी हो जाए और नेक्स्ट टाइम न्यूमेरिकल इंडक्टर रिलेटेड डिस्कशन करेंगे तब भी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग. This is simply, you can see that the question already asked in IIT 1997. So question number 7 already asked in IIT 1997. Check the diagram. There is a resistor, then a battery, and there is an inductor. Okay, your current passing through this resistor, it is 5 ampere. Resistance already given 1 ohm. There is a 15 volt battery, and there is a 5 millihenry inductor. This is point AB. Your target to find VB minus VA. Okay, find the potential difference between B and A. So friends, if you think about the same diagram but without this inductor, then what happens? You can see without inductor this numericals become, or this numerical becomes very easy. Simply we would like to apply Kirchhoff's law. But same story here, we will apply Kirchhoff's law, no doubt, but for that we have to consider simply 5 millihenry related point. Okay, so very interesting point, 5 millihenry. So start with, you can see that point A, let the potential here is VA and here potential is VB. Okay, so we'll start with, we can say that the first point, apply Kirchhoff's second law. But if you read the data very carefully, then here they mention one most important point. Here the current passing through this inductor is decreasing. Here current passing through this inductor
is decreasing at a rate of 10 raised to 3 ampere per second. This is your di by dt. देखते जाना बराबर. So start with, you can see that point A. We would like to apply Kirchhoff's second law. Start here. VA, current passing through this resistor is 5 ampere. So what is the potential drop across this resistor? Obviously, whenever you are discussing about resistor, then potential drop, current multiplied by resistance, so 5 multiplied by 1. What should be the polarity? Here you are moving from A to B, and your direction of journey and current both are in same direction. Current साथ साथ, chapter number 3, current साथ साथ, obviously you know that very well, potential difference negative. Current, you can see that in opposite direction of Anil Kapoor, you know that B positive. So but here current अपने साथ है, so minus. Now there is a battery, positive pole, you are moving from positive pole towards the negative pole. In short, there is a drop of voltage, voltage decreases, so we have to consider minus 15. Then there is an inductor. अब इंडक्टर आया था, मैंने लास्ट पार्ट 6 में बताया था, whatever the current passing through inductor, it is decreasing or increasing. If current decreases, then you have to consider potential difference positive. If current increases, then you have to consider potential difference negative. Current decreases, then this is the PD. Current passing through inductor increases, then you have to consider negative PD. Here current passing through inductor decreases, so we have to consider positive L di by dt. This is the potential difference across inductor is equal to VB. Okay, VA 5 minus 15 plus L already 5 millihenry, so minus 3, and di by dt rate of change of current, it is 10 raised to 3 VB, cancel, so VA and minus 5 also cancel, minus 15. But they asked the question about VB minus VA. Check it, VB minus VA. So answer obviously here you can see minus 50 volt. VB minus VA, and this is, you can see that yes. So answer here minus 50 volt. This is your answer. ओके, मगर मैंने डायग्राम थोड़ा चेंज किया. इधर देखो, यू कैन सी एज पर गिवन पेपर में डायग्राम ऐसे दिया है. देखो एक लाइन चेंज होने से इधर हो जाएगा प्लस, बिकॉज राइज अप वोल्टेज, सो प्लस प्लस, सो आंसर आएगा 15 वोल्ट पॉजिटिव. अगर पोलैरिटी उल्टी होती तो नेगेटिव, बट आई हैव चेक द डेटा एंड इन गिवन डेटा नेगेटिव पॉजिटिव गिवन, सो ऑब्वियसली राइज अप वोल्टेज, सो वी हैव टू कंसीडर पोटेंशियल पॉजिटिव. तो मस्त क्वेश्चन, इसके ऊपर अपन लोग कल के लेक्चर में जबरदस्त डिस्कशन करने वाले. पार्ट 7 है वो इंडक्टर के रिलेटेड ही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग, the self inductance of two solenoids A and B having equal length are the same if just a minute, yes, if the number of turns in two solenoids A and B are 100 and 200. Here number of turns for A 100, number of turns for B 200. Then what's the ratio of simply the radii of the cross section? देखो एक क्वेश्चन मस्त है. सेल्फ इंडक्टेंस सेम दिया. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड? वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड द फार्मूला. L is equal to mu naught n square A upon L. But here self inductance same, and that means you can see that same length. तो अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं या कंपेयर करेंगे. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड A is equal to self inductance of solenoid B. मगर ये दोनों तो सेम है इसलिए हटा देते हैं. Here Na square multiplied by area of A, here Nb square multiplied by area of B. Okay, Na Nb given, area is not given, but don't worry, here radius given. तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का अपन लोग रेडियस जानते हैं पाई आर स्क्वायर. तो इसमें अपन लोग एक कदम और आगे बढ़े. Na स्क्वायर पाई आर A स्क्वायर, Nb स्क्वायर पाई आर B स्क्वायर. पाई पाई भी कैंसल. अब ये 1 2 3 4 में से तीन चीजें दी है.
सॉरी दो चीजें आपको दी है और ये रेशियो फाइंड करना है। योर टारगेट टू फाइंड RA to RB, so RA upon RB is equal to NB upon NA, so NB है 200 और NA 100 है, so आंसर आएगा RA by RB 2:1। चेक इट। तो ये क्वेश्चन नंबर जिसे कह सकते हैं यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट IMP। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चंस वेरी वेरी IMP और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी मोस्ट 50 क्वेश्चंस के पेपर के लिए भी जोरदार। सो जस्ट एनालाइज। Okay friends, so now we would like to think about question number 9. So it is, you know that very well, the simple question based on magnetic flux. So question number 9, ये सभी क्वेश्चन वन टाइम लिख के परफेक्टली सबमिट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क। बी ग्रुप वाले खास हो सके तो हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद अपने आप सोल्व करो, एक बार पूरा पेपर थॉरली सोल्व करो, जहां पे मिस्टेक की वो करेक्ट करो। So friends, now we would like to think about question number 9 and then 10, 11, 12, 13, 14, 15. So question number 9, the flux associated with each turn of a coil of n turns changes from phi1 to phi2. If the total resistance of the circuit capital R, then induced charge. अब induced charge की तो बात करें, so you know that very well, induced charge, it is delta Q is equal to n delta phi by R for n number of turns. Here you know that very well, change in flux. Change in flux simply you know that very well, it is delta Q n delta phi, it is the change in flux final minus initial. So final minus initial upon R. This is the answer of this question. So this is question number 9, option B you can see. Super. So very easy based on this concept. ये मैंने कितनी बार बोला, जोरदार। Now we would like to solve question number 10. So 10 number very IMP. There are two circular coils can be arranged in any of the three situations. Three situations are given. This is, you can see there two coils. Then again you can see there two coils, and then again particularly this. These are the three situations. Situation number 1, 2 and 3. In short I can say the arrangement of two coils are given. This is the first arrangement, this one is the second arrangement, and this is the third arrangement. What's the question? So now we would like to think about question. Their mutual inductance will be blank. Options are very important. Maximum in situation 1, maximum in situation 2, maximum in situation 3, and the maximum, sorry, same in all situations. चलो, कौन सी सिचुएशन के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो जिसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, now you know that mutual inductance that means simply we have to think about the system of two coils. और याद करो म्यूचुअल इंडक्टेंस के मैंने 5 पॉइंट्स दिए थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर्स। नंबर 1 number of turns, number 2 large common area, you know that, number 3 relative orientation, number 4 relative separation, and number 5 the type of medium on which coils are wound you can see or wounded you can see. Okay, तो इधर अपन लोग relative orientation important word है। तो फर्स्ट है वो जिसे कह सकते हैं कि आइडियल है, क्योंकि इधर से मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस तरह जिसे कह सकते हैं इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। सेकंड में ऐसा नहीं होगा, दोनों परपेंडिकुलर है और इधर तो कोई चांस ही नहीं है इधर का कनेक्शन। सो यू कैन सी व्हाट हैपन। कोई बोले सेकंड का कुछ समझ में नहीं है, सेकंड में इसलिए नहीं होगा, ये ऐसे है, अब इसकी जो फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाए क्योंकि cos 90, और इधर आप देखो फ्लक्स और जिसे कह सकते हैं एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, बी और ए, तो cos 0 होगा तो फ्लक्स एसोसिएट होगा। सो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर एंड फर्स्ट वन इज द सिचुएशन विल प्रोवाइड maximum inductance, mutual inductance of the system. So good question, no doubt.
Question number 11, the masterpiece, और already we have discussed about it. ये मैंने आपको solve करवाया था, फिर भी मैं basic दे रहा हूँ. There are, you can see there two square coils, two concentric square coils, but the inner coil is very very small. That means the length of outer is L and length of inner is small l. L double greater than small l. और ऐसा हमने डिस्कशन किया है. Because of this statement L double greater than small l, this diagram can also be prepared like this one or considered like this one. ये जो पूरा स्क्वायर है उसके सामने जो इनर लूप है वो तो एक सेंटर के तौर पे काम करेगा, तभी अपन लोग ये आउटर लूप का मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लेंगे. तो दोस्तों वापस इसमें करंट फ्लो हो रहा है आउटर लूप में से. आउटर लूप को अपन लोग 2 नंबर दे दे, इनर लूप को 1. तो ये भी हम जानते हैं कि इसमें से करंट फ्लो होगा तो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएट होगा. अगर करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ. अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, so it is denoted by M12. That means mutual inductance of inner loop or loop 1 with respect to loop 2. करंट 2 में से पास हो रहा है, so phi 1 upon I2. तो phi 1 का मतलब होगा A1 B2 upon I2. ये भी सब कुछ डिस्कस किया. फ्लक्स का मतलब है एरिया मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड. अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आए तब आपको थोड़ा धीरे चलना है, स्पेशल इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. You can see here I have written phi 1. So obviously many students are thinking about A1 B1. Sorry, here A1 is the area of inner loop, okay. But here magnetic field is associated with inner loop, associated. Why? Produced. Whatever the magnetic field associated with inner loop, but it is basically produced by outer loop. इसलिए B2. और ये B2 फाइंड करना हो. B2 is the magnetic field due to this outer loop at the center. और सेंटर के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया है. जो बंदे पहले से अपने साथ जुड़ा उसको पता है, म्यू नॉट Ni sin pi by n tan pi by n upon pi into length of side. You can see. और ये वैल्यूज रख के हमने सोल्व किया था. मैं फाइनल आंसर M21 का दे रहा हूँ. M12 2√2 म्यू नॉट I upon pi into L. और आई थिंक जिसे कह सकते हैं कि आंसर में L नहीं आएगा, सॉरी इसमें वैल्यूज दी है तो मैं फाइनल आंसर था ऐसा L² upon pi है, ये हमने डिराइव किया था. अब इसमें वैल्यू रखते हैं. सो विल सेट अप द वैल्यू. सो M12 2√2 म्यू नॉट 4 pi into 10 raised to minus 7. What is the length of inner side? It is you can see as per given data, length of inner side it is 1 mm. So 1 into 10 raised to minus 3 square because मीटर में कन्वर्ट कर दिया. और आउटर का दिया है 1 मीटर, 1 only. You can see that we read that 10 meter only. So pi into 10. Okay, ये सभी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करो. So your answer here obviously 8√2 into 10 raised to minus 4 Henry. This is the mutual inductance. यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो बनेगा A. A is the right answer. तो देखो हमने डिस्कस किया था तो फॉर्मूला डिराइव किया था. ये एक एडवांस फॉर्म है फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की. So question number 11 also very IMP. Now we would like to think about question number 12. ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है 12 नंबर. So just think about it. Now we would like to solve 3 questions, 12, 13, 14, 15, sorry. But 11 number no doubt supreme. ऐसा ही हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6.9 डिस्कस किया हुआ है. Okay, so question number 12. There are two coils X and Y joined in a circuit in such a way that when the change of current in X in 2 ampere, the change in magnetic flux in Y is 0.4 Weber. These are the two coils X and Y.
इसमें अगर अपन लोग करंट चेंज करते हैं 2 एम्पियर, देन व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? 0.4 वेबर. ओके, देन व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम? लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम का अपन लोग ने डिस्कशन किया है. दिस इज कॉइल x में से करंट फ्लो हो रहा है, सो आई विल राइट हियर yx. Mutual inductance of the system of y and x, it is called mutual inductance of coil y with respect to x. So अभी हमने डिस्कस किया phi y upon ix, but here change. So what is your target? Delta phi y given 0.4, here 2, so 0.2 Henry, you can see. So this is the question number 12, very easy but also IMP. Now we would like to solve question number 13 now. Okay, so 13 number most IMP. तो ये क्वेश्चन है, उसका शॉर्टकट ही अपन लोग सीधा अप्लाई करेंगे. नो डाउट आप मेथोडोलॉजी थ्रू भी जा सकते हो, अगर मेथोडोलॉजी अपन लोग डिस्कस करना चाहें तो भी डिस्कस करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो a short circuited coil is placed in a time varying magnetic field. Electric power is dissipated in the form of joule heat due to the current induced in the coil. If the number of turns were to be quadruple and the wire radius half, the electrical power dissipated blank. तो एक फाइनल शॉर्टकट में जो दे रहा हूँ वो आपको याद रखना है. सो मोस्ट IMP, सो डोंट फॉरगेट. सो पहले तो पावर में जाने का है. सो पावर यू नो दैट वेरी वेल, इट इज power is equal to epsilon square r, but here you can see that as per given data number of turns and length, अपना मेन टारगेट है number of turns and length. ओके, तो पहले तो induced EMF का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, d phi by dt. so induced EMF is directly proportional to number of turns. अब r is the resistance, so resistance का फॉर्मूला rho l by a. So rho l upon pi r square. क्यों ऐसा किया? Because radius दिया है, so r is directly proportional to l upon r square. तो आप सभी वैल्यूज इसमें रखे. Epsilon is directly proportional to n square, r is directly proportional to l upon r square. तो ये शॉर्टकट धूम मचाएगा. चलो, अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि इसमें अपन लोगों को सिंपल लेंथ रिलेटेड पॉइंट दिया है. No doubt constant volume, but increasing the length of the wire from L1 to L2, its radius becomes, you can see that R1 to R2. Okay, तो अपन लोग इसमें लेंथ का कुछ तोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ इज नॉट गिवन हियर, ओनली 2 पॉइंट्स गिवन, नंबर ऑफ टर्न्स एंड रेडियस. तो हम लोग जानते हैं इधर वायर को चेंज करते हैं, तो वायर जब चेंज होगा तो नो डाउट रेडियस और लेंथ अफेक्ट होता है. जस्ट check it. This is the, you can see that wire initially length L1, the radius R1, but if you increase the length of wire, then obviously radius decreases. You know that radius decreases, area of cross section decreases, but one quantity remains constant, it is volume. So V1 is equal to V2, so I can write pi r1 square L1 for first situation, pi r2 square L2 for the second situation. pi cancel, so इधर अपन लोग देखें तो L1 by L2 is equal to R2 square by R1 square. ऐसा एक रिलेशनशिप मिला. ये ना इधर L की जगह, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो ओपोजिशन में यानी रेसिप्रोकल में, फिर भी ऐसा कुछ लोगों को ना पता चले इसलिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ. अब इसको मैं हटा देता हूँ. देखो फ्रेंड्स, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी IIT यानी कि JEE रिलेटेड है. ओके, सो नाउ वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस का ब्यूरो है. तो नाउ P अपने को फाइंड करना है, रेशियो P1 to P2. सो P1 by P2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर by N2 स्क्वायर, यानी कि N1 N2 द होल स्क्वायर. R की जगह आ जाएगा R1 by R2 द होल स्क्वायर अपॉन L की जगह आ जाएगा L1 by L2, मगर L1 by L2 की जगह I can put here R2 square upon R1 square. यानी कि ये देखा जाए तो N1 by N2 the whole square and R1 by R2 the whole power 4 हो जाएगा.
अब देखो इसमें वैल्यूज दी है n1 to n2 है वो क्वाड्रुपल, दैट मीन्स n2 सिंपली 4 टाइम्स ऑफ n1, ओके, और r2 बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वन, ये वैल्यूज रखते हैं तो n1 by n2 सिंपली 1 by 4 the whole square, r1 by r2 is equal to 2 raised to 4, so 16 divided by 16, that means 1:1, that's your answer. और इसका शॉर्टकट यही है कि जब भी आप नंबर ऑफ टर्म्स है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू कैन सी दैट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन पावर इज simply you can see that whenever wire is stretched in this situation, power is directly proportional to the n square, ये शॉर्टकट याद रखना है, into r⁴. तो इधर नंबर ऑफ टर्न्स और रेडियस में जो चेंजेस हो रहे हो एक दूसरे को कैंसिल कर इस तरह चेंज हो रहे हैं, सो आंसर डायरेक्ट, मगर ये शॉर्टकट याद रखना, वरना ये डेरिवेशन मैंने दिया है मोस्ट आईएमपी, ये थोड़ा चिकना केस जोरदार, ये तो पता चल गया n² r² l, मगर l में से रेडियस में जाने के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम का कांसेप्ट अप्लाई किया, बेहतरीन। तो ये इस पूरे पेपर का सबसे सुप्रीम क्वेश्चन है, सो जस्ट एनालाइज इट। Okay friends, so now we would like to think about question number next, यानी कि 14। तो ये मस्त क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आपके पास होना ही चाहिए दिमाग में एटलीस्ट। सो now we would like to clear remaining, you can see that questions. Okay, question number 14. Here the magnet is moving towards a coil along its axis and the induced EMF in the coil is epsilon. If the coil also start moving towards the magnet with the same speed, the induced EMF will be blank. तो ये तो मस्त क्वेश्चन है, मगर जरा देखें, पहले जो सिचुएशन देखते, magnet is moving towards a coil along its axis and the EMF induced in the coil is epsilon. But in second case what happened? In the second case the coil also starts moving towards the magnet, you can see like in this, both are moving towards each other with the same speed, then the induced EMF. तो पहला केस तो इजी है, मगर सेकंड केस के लिए आपको जरा देखना पड़ेगा। So what is the, you can see that case here, this is the induced EMF, motional EMF, ready, because as per given data only 2 points here mentioned, induced EMF and motion. Okay, so EMF is directly proportional to velocity. So first of all, first EMF is directly proportional to V because of only one body in motion, like this is magnetic moving V, coil already in rest, so its velocity 0. So what is the velocity of magnet with respect to coil? It is V minus 0 yani V. Okay, while in the second case you can see that what happens. Second case, this is the second case, there is a magnet is moving with speed V and there is a coil is also moving with speed V. So what is the relative velocity of magnet with respect to coil? Both are in opposite direction, then you know that there is summation. Relative velocity, chapter number 4, 3, standard 11th. So epsilon 2 is directly proportional to 2V. So if you think about the ratio, और ratio किसका पूछा है? Okay, if you find the ratio of epsilon 2 to 1, so 2V by V, in short induced EMF becomes double. So पहले जो epsilon था वो डबल हो जाएगा, so आंसर आएगा 2 epsilon. Question 14 also very interesting. Now okay, हमने 13 नंबर डिस्कस कर लिया, 14. Okay, now 15. Question number 15 last, the rod of length is 10 centimeter. ये भी मस्त question है. So 15 number, this is your 14 number, there is a rod of length 10 centimeter. Okay, is moving with velocity 10 meter per second in the perpendicular to the direction of a magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली वो मोशन कर रहा है with speed v. Okay, then the rate of increasing EMF generated in it is blank. क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, the rate of increasing EMF,
खाली ये में पूछते कि न्यूमेरिकल बहुत ही मजा ऐसा हो जाता, मगर ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग ये में पूछा है। दैट मीन्स योर टारगेट टू फाइंड डी एप्सिलॉन बाय dt। अब अपन लोग तो जानते हैं कि एप्सिलॉन, व्हाट इज द मोशनल ईएमएफ इफ दिस रोड passing through magnetic field with velocity v, then what is the motional EMF? It is BVL. So by taking differentiation, B and L constant, so dV by dt, but here velocity given 10 meter per second, you can see 10 and it is constant. So what is the differentiation of constant term? 0. तो आंसर 0 है। ऐसा कुछ ना करना हो तो पहले EMF फाइंड कर लो, EMF मिल जाएगा 10 dB के ऊपर से, और फिर उसका डिफरेंशिएशन, तो EMF आएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, मगर ये इजी मेथड। सो आंसर आएगा 0 वोल्ट पर सेकंड। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड मोस्ट टाइम पे 15 क्वेश्चंस एज पर आवर यू नो द वेरी वेल बेसिक प्रोग्राम मेथड के मुताबिक हम लोग कोई भी पेपर लेते हैं तो उसका फिर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये 15 क्वेश्चंस, मुझे ऐसा बोले कि आप को ये 15 क्वेश्चंस का रेटिंग, तो मैं 15 के 15 को बेस्ट ही कहूँगा। और आप अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर सेट है उसमें आप खंगालोगे तो ये क्वेश्चंस आपको कहाँ ना कहाँ देखने को मिलेगा। मोस्ट IMP, so all questions are very IMP. Each and every question has, we can say that, some unique